Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the cell wall of bacteria. So let's move to the class board. So dear students, bacterial cell wall. Very important long question. So that is basically the third type of classification which we are going to discuss in this chapter. तो बैक्टीरिया के हवाले से हमने दो क्लासिफिकेशंस पहले पढ़ ली, एक शेप के बिहाफ के ऊपर और दूसरी फ्लैजिला के बिहाफ के ऊपर. ऑन द बेसिस थर्ड जो है आज हम पढ़ते हैं इसमें सेल वॉल के बिहाफ के ऊपर भी. टोटल 5 क्लासिफिकेशन हमने इसकी बैक्टीरियल की पढ़नी है इस चैप्टर में. सो बैक्टीरियल सेल वॉल, हम एनवेलप की डिस्कशन कर रहे थे. सो एनवेलप हमने बात की थी स्लाइम, कैप्सूल एंड द सेल वॉल. दे आर collectively complexes of layers present in the bacteria which are present outside the protoplasm. तो उसको हम collectively कहते हैं एनवेलप. उसमें से स्लाइम और कैप्सूल हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था. नाउ द थर्ड कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, हमने इनिशियल लेक्चर्स में भी बात की थी कि मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया दे पोजेस द सेल वॉल. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जो सेल वॉल है इसके अंदर भी काफ़ी वैरायटी मौजूद है. मुख्तलिफ तरह की जो हैं वो वेरिएशंस हैं बैक्टीरिया जिनके अंदर मौजूद हैं. सो लेट अस डिस्कस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट इट्स क्वेश्चन. External to cytoplasmic membrane. Dear students, cytoplasmic membrane किसे कहते हैं पहले पढ़ चुके हैं. सो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे हम सिंपली कह सकते हैं, ठीक है. सो विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. उसके बाहर यानी एक्सटर्नल टू दिस एंड जस्ट beneath the extracellular substances. Extracellular substances किसे कहेंगे डियर स्टूडेंट्स? जिससे हमने प्रीवियसली पढ़े लाइक स्लाइम, लाइक कैप्सूल्स, ठीक है. इस तरह के मुख्तलिफ तरह का स्ट्रक्चर जो है वो उसके सेल के जो बाहर मौजूद होते हैं उनके नीचे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, एक्सटर्नल टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, there is present a hard structure that is cell wall is present. तो वहां पर मौजूद है cell wall. Clear? And it is basically the location. ये हमने इसके लोकेशन के हवाले से बात की. Now its composition. So cell wall of bacteria or most of the bacteria is made up of, so dear students, किससे बनती है? It is made up of peptidoglycan. It is made up of peptidoglycan. Clear? And peptido is for peptides, means कि proteins से related है, amino acids से related है. Glycan is from sugars, ठीक है. तो उसका एक combination होता है polysaccharides, जिसमें अब peptidoglycan में क्या होगा dear students? The peptidoglycan इसका स्ट्रक्चर हमने चैप्टर नंबर 4 के लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था. सो पेप्टाइडोग्लाइकन इज composed of
long chains of glycans. लॉन्ग चेन्स हैं किसकी? ग्लाइकैन मीन्स के शुगर्स, ठीक है, एंड which are cross-linked यानी आपस में जुड़ी होती हैं, क्रॉस लिंक्ड होती हैं बाय शॉर्ट पेप्टाइड्स, बाय शॉर्ट पेप्टाइड चेन्स। इसको हम कलेक्टिवली म्यूरिन भी कहते थे, ठीक है, ऑल्सो नोन एज म्यूरिन। सो होपफुली आपको याद आ गया होगा, चैप्टर नंबर 14 में म्यूरिन हमने पढ़ा था। सो डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, उसके लास्ट में हमने इसको डिस्कस किया था, क्लियर। सो ये चीज़ एक यानी कि स्पेशलाइज्ड चीज़ है जो कि बैक्टीरियल सेल के अंदर मौजूद होती है। ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर सेल वॉल है, यानी मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया दे पोजेस द सेल वॉल, उनके अंदर दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन क्या चीज़ है? इट इज कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ ग्लाइकन विद विच आर क्रॉस लिंक्ड बाय शॉर्ट पेप्टाइड चेन्स, जिसको हम म्यूरिन भी कहते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को कलेक्टिवली। और इवन के जो पेप्टाइडोग्लाइकन जो है, इसकी कंपोजिशन यानी कि इनके जो वेटेज है वो भी डिफर करती है डिफरेंट बैक्टीरिया के अंदर, वो भी हम डिस्कस करेंगे। The percentage composition of peptidoglycan vary in bacteria, बैक्टीरिया के अंदर वेरी करती है, क्लियर। एंड देयर आर अदर स्ट्रक्चर्स, some other substances in addition to peptidoglycan are also present, यानी पेप्टाइडोग्लाइकन के अलावा भी कुछ सब्सटेंसेस हैं जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर मौजूद होती हैं, which include शुगर्स, उसमें शुगर्स मौजूद हैं, उसमें टाइकोइक एसिड and lipoticoic acid, yeah, and lipopolysaccharides, and lipoproteins, etc. they are present, yeah. तो सेल वॉल में जो मेजर स्ट्रक्चर क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकन, और इसके अलावा भी कुछ सब्सटेंसेस मौजूद हैं इन एडिशन टू दिस पेप्टाइडोग्लाइकन, व्हिच आर शुगर्स एंड टाइकोइक एसिड, लाइपोटाइकोइक एसिड, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स एंड लाइपोप्रोटीन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं डियर स्टूडेंट्स जिनमें यानी कि हमने बात की कि वेरी फ्यू बैक्टीरिया दे लैक सेल वॉल, ठीक है, सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, याद रखना आपने, cell wall
is only absent in, जी स्टूडेंट्स किस में एब्सेंट है, कौन से बैक्टीरिया में एब्सेंट है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पहले डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ. सो दे आर ओनली एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा, इन माइकोप्लाज्मास, ठीक है. एंड इवन द सेल वॉल ऑफ आर्कियोबैक्टीरिया वो डिफर करती है एक ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कंपोनेंट्स के एतबार से अगर हम बात करेंगे, ठीक है. द सेल वॉल ऑफ आर्कियोबैक्टीरिया लैक पेप्टाइडोग्लाइकन, उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं है. इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इसको अंडरलाइन कर लें अभी से ही. जैसे जैसे साथ साथ आपको जो चीज़ें मार्क करवा रहा हो तो उसको लिख लिया करें, ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपके सामने वो चीज़ें ऑलरेडी हाईलाइटेड हो कि कौन सा एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा शॉर्ट के लिए, कौन सा लॉन्ग के लिए, ठीक है. तो ये एमसीक्यू, ये वाला भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है. ऊपर हमने कंपोजिशन पढ़ी एमसीक्यूज में. सो द सेल वॉल ऑफ आर्कियोबैक्टीरिया लैक पेप्टाइडोग्लाइकन, इंस्टेड इसकी जगह पे इट इज कंपोज्ड ऑफ proteins and glycolipids एक्सेट्रा, ठीक है. सो मुख्तलिफ तरह के यहाँ पर स्ट्रक्चर मौजूद हैं, लेकिन पेप्टाइडोग्लाइकन इनके अंदर नहीं मौजूद इन द बैक्टीरिया ऑफ द इन द आर्कियोबैक्टीरिया. क्लियर. बाकी ये सारी जो कंपोजिशन, ये सारे यू बैक्टीरिया के एतबार से इंपॉर्टेंट है, ठीक है. और ये सिर्फ आर्कियोबैक्टीरिया जो हमने बात की थी कि दो मेजर डिविजन्स हैं बैक्टीरिया की, एक यू बैक्टीरिया और दूसरा आर्कियोबैक्टीरिया. और यहाँ पर माइकोप्लाज्मास में भी याद रखना है, इनके अंदर सेल वॉल तो होती ही नहीं है, सिरे से नहीं है, ठीक है. नाउ important thing, very very important thing is related to this cell wall is कि there was a scientist by the name of Christian Graham. उसने सेल वॉल की स्टेनिंग के बिहाफ के ऊपर जो है वो बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया था इनटू टू ग्रुप्स, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव. ये एक पूरा प्रोसीजर है, आप प्रैक्टिकल जब परफॉर्म करेंगे तो उसमें ये ग्राम स्टेनिंग वाला प्रोसीजर आपके प्रैक्टिकल्स में भी शामिल है. एक्चुअली इसमें दो तरह की डाइज को इस्तेमाल किया जाता है, स्टेनिंग डाइज इस्तेमाल किया जाता है. तो ऐसे बैक्टीरिया जो वो दो डाइज हैं जो बेसिक डाइज है इसमें, एक है प्राइमरी और दूसरी है सेकेंडरी. प्राइमरी डाई जो होती है वो क्रिस्टल वायलेट से बनी हुई है, दैट इज क्रिस्टल वायलेट. और उस वो ऐसे बैक्टीरिया जिनकी सेल वॉल क्रिस्टल वायलेट डाई यानी प्राइमरी डाई को वो अटेन कर लेंगे, उनकी सेल वॉल उससे रंगी जाएगी, उनको कहते हैं ग्राम पॉजिटिव. और ऐसे बैक्टीरिया जिनकी सेल वॉल वो सेकेंडरी डाई से डाई हो जाएगी, रंग जाएगी, उन्हें कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. और वो आमतौर पर पिंक कलर की होती है. जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं ये पर्पल कलर के होते हैं, ठीक है. सो दैट इज़ बेसिक डिफरेंस. तो एक पूरा प्रोसीजर है. सो हम यहाँ पर ग्राम जो स्टेनिंग थी उसके एतबार से जो सेल वॉल की जो कंपोजिशन है उसका कंपैरिजन भी पढ़ते हैं. फिर उसके एंड के ऊपर हम इसके जो है वो सेल वॉल के फंक्शंस को भी डिस्कस कर लेंगे. So here is the classification of bacteria on the basis of gram staining. On basis of gram staining, ठीक है. So that was proposed by Christian Graham. साइंटिस्ट का नाम रखना है याद आपने, ठीक है. Christian Graham. He was a Dutch bacteriologist, ठीक है. और according to him there are two categories of bacteria.
So here we will discuss the characteristics, and over here gram-positive bacteria and gram-negative. Bacteria. So here we go. The first thing, that is on the basis of gram staining. So first point is the dye. The gram stain. So as far as gram stain is concerned, the gram positive, their cell wall is stained purple due to primary dye, that is crystal violet iodine कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और इसको CVI कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं. सो बेसिकली ये क्रिस्टल वायलेट होती है डाई, जो प्राइमरी डाई है, और जब ये उसके साथ सेल वॉल के साथ उसके साथ डाई हो जाएगी तो उसमें क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसकी वजह से ये पर्पल लुक पर्पल. जबकि जो ग्राम नेगेटिव है तो सेल वॉल is stained pink due to secondary dye इसमें जो इस्तेमाल होती है दैट इज सैफ्रानिन. तो सैफ्रानिन अटेन करने की वजह से वो पिंक कलर की इनकी जो वॉल है यानी कि सेल वॉल दिखाई देगी. नंबर 2, द सेकंड character which we are going to discuss is number of layers. So gram positive, there is number of major layer is 1, and gram negative, there are 2 major layers. Number 3, the third point, the composition of cell wall. Composition of cell wall. So as far as composition is concerned,
The gram positive, the peptidoglycan, which is 50% dry mass in some bacteria, जो कि 50% तक हो सकती है, यानी ड्राई मैस में है, उसमें से अगर बाकी सारी चीज़ों को रिमूव, सिर्फ पेप्टाइडोग्लाइकन की बात की जाए तो 50% ड्राई मैस है इन सम बैक्टीरिया, जबकि पेप्टाइडोग्लाइकन ग्राम नेगेटिव में भी मौजूद है. सो हियर peptidoglycan, that is 10%, ये 10% of dry mass in some bacteria. तो इतना डिफरेंस है, यानी ये 10% पेप्टाइडोग्लाइकन इटसेल्फ इसकी कंपोजिशन में इतना डिफरेंस है, ये 50% और ये 10%. इसके अलावा जो ग्राम पॉजिटिव हैं इन पेप्टाइडोग्लाइकन के अलावा यहाँ पर मौजूद है टाइकोइक एसिड एंड लाइपोटाइकोइक एसिड. जबकि ग्राम नेगेटिव में यहाँ पर मौजूद हैं in addition to peptidoglycan, the polysaccharides and lipoproteins. So these are basically the lipopolysaccharides. These are lipopolysaccharides. यहाँ पर इसको मेंशन कर देता हूँ. Lipopolysaccharides, clear? And lipoproteins. And the fourth point is the composition of lipids. कि lipid content की बात करें, इनमें comparison है. So the fourth point is the percentage of lipids. So as far as in gram positive, they are 1 to 4%. While in gram negative, they are 11 to 12%. Now, another point is there. The overall thickness of cell wall. So as far as overall thickness is concerned, so gram positive की जो cell wall होती है, इसमें चूंकि peptidoglycan 50% तक मौजूद है, so it is more thick as compared to the gram negative. So basically it is from 20 to 80 nanometers. इसकी जो ओवरऑल थिकनेस है, क्लियर. और जबकि यहाँ पर एज फार एज द ग्राम नेगेटिव इज कंसर्न, इट इज़ फ्रॉम 8 to 11 नैनोमीटर्स. सो इसकी जो ओवरऑल जो यहाँ पर लेयर मौजूद है. नंबर 6, another point is there as far as comparison is concerned, that is periplasmic space. So periplasmic space, dear students, आपके डायग्राम में भी आपसे इसको शेयर करूँगा. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो सेल वॉल, यानी जो ये इनकी जो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होती है, इसके दरमियान जो स्पेस होती है उसे कहते हैं पेरीप्लाज्मिक. पेरी मीन्स अराउंड. सो एज फार एज ग्राम पॉजिटिव आर कंसर्न्ड, इनमें कुछ के अंदर मौजूद होती है, प्रेजेंट इन सम बैक्टीरिया.
possess periplasmic space. As far as gram-negative is concerned, it is present in all bacteria. All bacteria का मतलब यहाँ पर ग्राम नेगेटिव की बात है, उनमें तमाम के अंदर मौजूद होती है पेरिप्लाज्मिक स्पेस. And another point is there, that is outer membrane. So in gram positive, there is no outer membrane, while in gram negative, they have outer membrane. And in the last, one more point is the permeability. So gram positive जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो सेल वॉल्स होती हैं, they are more permeable. They are more permeable. Permeability means के allowing the transport of substances across the membrane, across the cell wall, and they are less comparatively permeable. Less permeable. Comparatively. So dear students, now we are going to draw the diagram in order to understand this comparison. So here is this is the cell membrane or plasma membrane or cytoplasmic membrane in blue color, lipid bilayer structure. So this is this is actually the cell wall, the structure of cell wall of gram-positive bacteria. And these four layers, that is basically peptidoglycan. ये पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है इनकी ग्राम पॉजिटिव, ठीक है. और ये जो उनसे आपको ग्रीन कलर में ये स्टिक्स जो नज़र आ रही हैं यहाँ पर, दैट इज़ बेसिकली द टाइकोइक एसिड, and this one is lipoticoic acid. Okay, and there is a space between. ये space आपको नजर आ रही है. This space is called the pericycle.
plasmic space, and this one is the cytoplasmic membrane. Cytoplasmic or plasma membrane. Clear? And this is the structure for gram-positive bacteria. Now, the gram-negative. So, and this is cytoplasmic membrane. The lipid bilayer structure. So here we go. So this is the structure of the gram-negative bacteria. So ये आपको जो ऊपर जो sticks type structure नजर आ रहा है, this one, that is the lipopolysaccharides. और उसके नीचे ये मौजूद है, this one is the outer membrane. Clear? और उसके नीचे ये आपको ये जिनसे ऑरेंज कलर में नज़र आ रही हैं, ये इस तरह से स्ट्रिक्स या ब्रांचेस. दिस इज बेसिकली द lipoproteins, and this a singular, ये उनसे पिंक कलर की नज़र आ रही है, this one. So this is the peptidoglycan of gram-negative bacteria. और ये स्पेस क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स, हम पहले पढ़ चुके हैं, ये पेप्टाइडोग्लाइकन और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के दरमियान. सो दैट इज पेरीप्लाज्मिक स्पेस. पेरीप्लाज्मिक स्पेस, एंड ओवर हियर this layer is the cytoplasmic membrane, or which we call as the plasma membrane. Clear? So is that clear to you? So this is the structure of gram-negative
बैक्टीरिया तो अब इसमें ज़रा यहाँ से कंपैरिजन में आते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकन की यहाँ पे 4 लेयर्स नज़र आ रही हैं, 4 लेयर्स पेप्टाइडोग्लाइकन, और इन लेयर्स को आपस में जुड़ा हुआ है लाइपोटाइकोइक एसिड और टाइकोइक एसिड ने। इसी वजह से यहाँ पर हमने पढ़ा द पेप्टाइडोग्लाइकन 50% ड्राई मास। अब इस पेप्टाइडोग्लाइकन और इस पेप्टाइडोग्लाइकन जो कि सिंगल लेयर, इसको कंपेयर करें तो ये 50% है और ये तकरीबन 10% के उसका ड्राई मास बनता है। क्लियर? तो ये आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आ गया, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर टाइकोइक एंड द लाइपोटाइकोइक जो इनके दरमियान में इनको स्टिक किया हुआ है। एज फार एज ग्राम नेगेटिव इज कंसर्न, यहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकन और साथ में मैंने बताया था लाइपोपॉलीसैकेराइड्स और लाइपोप्रोटीन्स। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले ऊपर एक ये आउटर मेम्ब्रेन मौजूद है ग्राम नेगेटिव में। ये आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर आपको नजर आएंगे सबसे पहले लाइपोपॉलीसैकेराइड्स और फिर उसके नीचे नजर आएंगे लाइपोप्रोटीन्स, और लाइपोप्रोटीन्स आगे अटैच्ड हैं विद द पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है, इस तरह से ये सीक्वेंस है, पहले ऊपर लाइपोपॉलीसैकेराइड्स, फिर आउटर मेम्ब्रेन, फिर लाइपोप्रोटीन्स और फिर उसके बाद पेप्टाइडोग्लाइकन की एक जो वो सिंगल आपको लेयर नजर आ रही है। सो इसी तरह से यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकन 10% ड्राई मास होता है, तो ये सिंगल लेयर, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स एंड द लाइपोप्रोटीन्स, ये लाइपोप्रोटीन्स आ गए। क्लियर? नंबर ऑफ मेजर लेयर्स, तो यहाँ पर मेजर लेयर्स कितनी है डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पर आपको मेजर लेयर कितनी नजर आ रही है? 1। यहाँ पर मेजर लेयर्स 2, 1 एंड 2, 2 चीजें, ये 2 पॉइंट्स क्लियर हुए। नंबर 3, लिपिड्स, तो लिपिड्स का कंटेंट देखें यहाँ पर कहाँ पे है? यहाँ पर लाइपोप्रोटीन्स भी हैं, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ लाइपोटाइकोइक एसिड मौजूद है, इसके अलावा कोई और दूसरा यहाँ पर लिपिड आपको नजर नहीं आ रहा, यानी कि इसकी बात करेंगे। यहाँ पर ऊपर लाइपोपॉलीसैकेराइड्स भी हैं और नीचे लाइपोप्रोटीन्स भी हैं, तो इस वजह से यहाँ पर लिपिड का कंटेंट कम है, ग्राम नेगेटिव में लिपिड कंटेंट ज़्यादा है। परसेंटेज कंपोजिशन के एतबार से देखेंगे तो ग्राम पॉजिटिव में 1 to 4%, वाइल द ग्राम नेगेटिव दे आर 11 to 12%। क्लियर? ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर लाइपोपॉलीसैकेराइड्स भी और लाइपोप्रोटीन्स भी मौजूद हैं। नाउ अनदर पॉइंट, ओवरऑल थिकनेस आपके सामने है। यहाँ पे देखिए ये इतना ज़्यादा थिक है, 20 to 80 नैनोमीटर्स, और यहाँ पे इसकी थिकनेस देखें पेप्टाइडोग्लाइकन की बिल्कुल थोड़ी सी, सो इट इज़ 8 to 11 नैनोमीटर। क्लियर? ये इतने सी और ये देखें कंपेरेटिव, तो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा ओवरऑल थिकनेस। नाउ पेरिप्लाज्मिक स्पेस, सो स्पेस मैंने आपको बताया था कि पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या है? इट इज द स्पेस बिटवीन द सेल वॉल एंड द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के दरमियान स्पेस होती है, उसे कहते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। तो ग्राम पॉजिटिव में कुछ के अंदर होती है, कुछ के अंदर नहीं होती, जबकि ग्राम नेगेटिव इनमें सब में मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने शो करवाई है, लेकिन कुछ में है, बाकियों में ग्राम पॉजिटिव के अंदर ये स्पेस भी नहीं होती, डायरेक्टली इसके नीचे ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पड़ी होती है। क्लियर? उसके बाद आते हैं आउटर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर क्या कहीं पर भी आपको आउटर मेम्ब्रेन नजर आ रही है सेल वॉल के बाहर? तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है? आउटर मेम्ब्रेन, फिर उसके नीचे पेप्टाइडोग्लाइकन, फिर उसके नीचे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर नो इन ग्राम पॉजिटिव देयर इज नो आउटर मेम्ब्रेन, while in gram negative there is outer membrane। ठीक है? और जहाँ तक परमिएबिलिटी की बात है, चूंकि ये सिंगल लेयर है और इसमें ज़्यादा मतलब कि वो सच कोई स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं होते, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट लेयर्स की फॉर्म में, नंबर ऑफ लेयर्स की भी बात करेंगे तो उसमें एक ही है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ मोर परमिएबल कंपैरेटिवली टू द ग्राम नेगेटिव, और ये ज़्यादा परमिएबल होता है एज कम्पेयर टू द ग्राम, जो ग्राम नेगेटिव दैट इज़ लेस परमिएबल, gram positive more permeable। And in the last the functions, so जहाँ तक functions की बात है, so 2 major functions। Number 1, it provides support provide कर रही है and shape to bacterial cell, तो सपोर्ट भी है और शेप भी मेंटेन कर रही है सेल वॉल। और दूसरे नंबर पर प्रिवेंट्स फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस,
ऑस्मोटिक लाइसिस। ऑस्मोटिक लाइसिस क्या होता है कि अगर ये बैक्टीरियल सेल है, इसके अंदर एंड ऑस्मोसिस की वजह से पानी अंदर आता रहे और उसकी वजह से सेल ऐसे स्वेल कर रहे और फट जाए, इसे कहते हैं ऑस्मोटिक लाइसिस। चूंकि इनके अंदर सेल वॉल है, वो ऑस्मोटिक लाइसिस को रेजिस्ट करेगा, बैक्टीरियल सेल को रप्चर होने से बचाएगी ये इसकी सेल वॉल बैक्टीरिया की। सो दैट दीज आर द टू मेजर फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द बैक्टीरियल सेल वॉल। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे मजीद बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर्स। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।